Namaskar. Today I will teach you the topic basic agriculture practices. What are agriculture practices? All the activities which are involved in cultivation of crops from sowing to harvesting are known as agriculture practices. Now the basic agriculture practices which are common to all crops are preparation of the soil, sowing, applying manures and fertilizers, irrigation, weeding, protection of crops from pests and microorganisms, harvesting, threshing and winnowing, and the last one is storage. So all these 8 steps are practices during from sowing to harvesting. Now the first one which we will discuss now, that is preparation of the soil. This is very essential stage for cultivating any crop plant. Now preparation of the soil involves 3 steps: plowing, then leveling and manuring. Now what happens? What do you mean by plowing? Plowing is also known as tilling. Actually, it is the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a wooden or iron plow, and sometimes plows are either drawn by the bullocks or driven by tractors also. Now loosening of soil by plowing has the following advantages. The first one is it permits easy and deeper penetration of the roots. It provides good adhesion to the roots. It retains moisture for a longer period, and it helps in uprooting the weeds. Now plow करने से क्या होता है कि इससे क्या होगा, हमारी जो roots हैं वो उसमें अच्छे से हवा वगैरह जाएगी, because there will be a pores. It will provide good adhesion to the roots. Then it will keep moisture for a longer period, and also helps in uprooting the weeds. Weeds are what? They are unwanted plants which are grown along with the crop. So it helps in uprooting that also. Now the next is leveling. Now what happens? Soil is plowed in dry season. It breaks into big mud pieces. That is called crumbs. Crumbs is what? जो टुकड़े होते हैं ना, pieces जिन्हें बोलते हैं. तो जब ड्राई सीजन में अगर हम प्लो करेंगे उसको, तो वो क्या होंगे? बड़े बड़े मड पीसेस बन जाएंगे. That is known as crumbs. So it is necessary to break these crumbs with the help of a wooden plank or iron leveler. Leveler करने से क्या होगा कि वो प्रॉपर जो लैंड है हमारी वो प्रॉपर तरीके से लेवल हो जाएगी. So it will be easy for us to sow as well as for irrigation purposes. Now the process of leveling has many advantages. For example, it breaks crumbs into smaller pieces. जब हम लेवलिंग करेंगे तो हमारे जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन. सॉइल इरोजन मीन्स कि सॉइल जो वॉश अवे हो जाती है उसकी वजह से वो क्या करेगा कि हमारी जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर होगी, अपर फर्टाइल लेयर, इट विल प्रोटेक्ट दैट आल्सो. इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म इरिगेशन, proper distribution you can say. Then is manuring. This is the third step which is included in preparation of the soil. Mixing of soil with manure is called manuring. मिट्टी में soil में खाद का मिलाना उसे हम manuring बोलेंगे. Manure is usually added to the soil both before and after tilling. ये प्लो करने से पहले भी आप डालना है और बाद में भी डालना है. अगर हम पहले डालेंगे तो इट विल हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल. अगर हम प्लो करने से पहले लैंड में अगर खाद डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो खाद है वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉइल में. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज सोइंग. What do you mean by sowing? Bona. That is the process of putting seeds into the soil. That is called
sowing. Now, there must be some points. There are some points which should be kept in mind while sowing seeds. जब भी हम seeds को sow करेंगे तो हमें कुछ बातें जो हैं, points जो हैं, वो अपने mind में ध्यान में रखना है. वो first is seed should be of good quality, healthy and free from infections. वो कोई भी इसको इन्फेक्शन, फंगस नहीं लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई ऐसा नहीं मरे हुए जैसे सीड्स होते हैं तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट पर्पस देन सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद सुटेबल फंजिसाइड्स टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीजेस. कई बार क्या होता है, बीज को कोई बीमारी भी लग जाती है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने शुगर केन देखा होगा, तो शुगर केन कई बार आप उसको तोड़ते हैं तो वहाँ पे रेड कलर का हो जाता है, तो वो एक बीमारी होती है, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. सिमिलरली ऐसे और भी मतलब कि कोई जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनमें भी बीमारियां हो जाती हैं, मे बी सम ड्यू टू सम फंजाई और ड्यू टू सम इन्फेक्शंस, ड्यू टू सम वायरसेस आल्सो, सो ड्यू टू सम बैक्टीरियाज आल्सो. सो हमें पहले क्या करना है कि सीड्स को पहले ही कोई फंजीसाइड्स मीन्स साइड्स इज टू किल समथिंग. तो फंजाई कुछ ऐसे केमिकल्स होने चाहिए जो उस फंजाई को मार सके, तो हमने पहले ही सीड्स को अच्छे से उससे ट्रीट कर लेना है ताकि कोई उनमें बीमारी ना लगे. देन सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग. क्या करना है आपको, सीड्स को भी राइट डिस्टेंस मतलब कि एक दूसरे के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए. अगर प्रॉपर गैप नहीं होगा सो दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, अगर साथ में होंगे तो क्या होंगे, किसी भी क्रॉप को अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, दोनों को उनके बीच में कंपटीशन होगा एंड दैट विल नॉट ग्रो अप प्रॉपरली. मे बी समवन विल लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सम विल नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. Now, what are the methods of sowing? Now, methods of sowing, there are mainly two methods of sowing, that is broadcasting and by using a seed drill. Now, broadcasting is actually, in this method, the seeds are sown manually by directly scattering them into the soil. Soil में हम सीधे ही डाल देते हैं, जिस ऐसे scatter करके, and this process is called broadcasting. Actually, it is a traditional method. पहले ये यूज होता था in most parts of the country. But इससे क्या होता था, इसका रिजल्ट ये होता था कि unequal distribution of seeds over the area. Then with this it leads to wastage and reduced crop yield. हमारी क्या होता था, इसमें वेस्ट होने का भी होता है because you are scattering and में कि कहीं ऐसे हो कि कहीं 2-3 इकट्ठे हो गए हो, कहीं एक भी ना हो, तो many reasons will be there. And naturally what will happen, it will be leads to wastage and naturally the crop production will be reduced, कम होगी आपकी crop production. Then by using a seed drill. Now another method which is used to sow the seeds is a seed drill. A simple seed drill क्या होती है, it consists of an iron tube with a funnel at the top which is attached to the plow. And what happens, then seeds are introduced into the funnel opening and then released into the soil furrows made by a plow. आप ऊपर डाल देते हैं और प्लो जैसे करते रहते हैं, हल चलता रहता है, सीड जो है अल्टीमेटली उसमें नीचे गिरते जाते हैं. So by this method seeds are sown at the correct depth and interval. इससे क्या होता है, प्रॉपर डेप्थ के जहाँ वो मतलब अच्छे से डेप्थ नीचे सीड्स सो हो जाते हैं और प्रॉपर इंटरवल पे एक गैप के बीच में हो जाएगा. नेचुरली इट विल सेव आवर टाइम एंड लेबर आल्सो. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन. दिस इज आल्सो वन ऑफ द टर्म. ये क्या होती है, देयर आर सर्टेन क्रॉप्स जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट पैडी जो धान होता है, एंड सम वेजिटेबल्स जिसके क्या होते हैं, फॉर विच सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड्स. व्हाट वी विल डू फर्स्ट, actually they are first germinated in nurseries and then the seedlings are transferred to the main field. This process is known as transplantation.